guys, welcome to SSC Baba. Today in SSC Baba, we will start fifth episode of this descriptive session जिसमें हम लोग SSC के अलग अलग एग्जाम CGL, CHSL वगैरह की कॉपीज हम लोग आपको दिखा रहे हैं। 4 एपिसोड्स अभी तक हो गए हैं। दिस इज द फिफ्थ एपिसोड और इसमें हम लोग एक पेपर लेकर आए हैं जिसमें मार्क्स 76 है। So 76 out of 100 is a very good marks. So 76 marks की ये एपिसोड है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो स्टार्टिंग फर्दर, ये CGL 2018 की मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ फॉर 78 मार्क्स, 38 एंड 38 ईच। ओके, 38 एंड 38 ईच 76 मार्क्स की पेपर है। ओके, इस पेपर में कुछ बातें जो आपको ध्यान देनी है। द फर्स्ट थिंग इज कि राइटिंग इज सुपर गुड। ओके, राइटिंग इज सुपर गुड एंड द कंटेंट इज ऑल्सो गुड। कंटेंट भी कहीं कुछ गलत नहीं है, कटिंग नहीं है, कहीं पर भी स्मॉल या कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं किया गया है और इसीलिए 38 एंड 38 दोनों ही लेटर और ऐसे दोनों में मिला है। जो आपको ऐसे आता है दैट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। तो विल सी कि क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले, माय नेम इज अमित भारद्वाज। Okay, so let's start with the today's topic, importance of education in present time. If one needs to destroy a country, one just needs to cripple its education system, because education is of vital importance to build and transform a country. And, and imparting education doesn't necessarily mean formal education, which involves memorizing subjects in ओके, टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग बहुत ही अच्छी तरह से लिखे हुए है। राइटिंग में कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं मिली है मुझे। ओके, सो राइटिंग इज सुपर गुड। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से, देखिए आपको ना कीवर्ड को पहले पहचानना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। सो द कीवर्ड इज इंपॉर्टेंस, एजुकेशन एंड प्रेजेंट टाइम। ओके, तो इंपॉर्टेंस में जाहिर सी बात है, अगर एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा सो व्हाट शुड बी डन। अगर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है तो व्हाट शुड बी डन इन दैट केस एज वेल। प्रेजेंट टाइम में कहाँ कहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छी है वो भी अगर हम लोग एग्जाम्पल से करते हैं तो बेटर होगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी नीड टू गो। और इस तरह से यहाँ पर आप पूरे प्रोसेस में यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताया हुआ है, राइटिंग बहुत ही अच्छी है एंड इन्होंने ये भी बताया इट्स नॉट जस्ट द फॉर्मल एजुकेशन हमें चाहिए। ओके, हमें एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए, इससे और भी कुछ ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव हाई ग्रेड्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इनकलकेटिंग मोरल वैल्यूज, promoting creativity and emotional intelligence among children. Okay, if we glance our all the education system over the world, Finland and Japan emerge at the top. Okay, ये फिनलैंड जापान दो एग्जांपल्स की बातें कर रहे हैं so that कि हम लोग कंपेयर कर पाए importance of education. In Finland, the sole focus is on children actually eager and enjoying the process of learning. Process of learning is important, not the mere learning of books. And Japanese schools are known for their discipline, moral values. Okay, discipline, moral values, and unique learning methods. Japanese children usually clean the school premises and engage in backyard gardening. These are unusual practices but can shed light on how we can improve our education system. In the recent years, the number of students achieving high grades have rose significantly. But we also come across news of mass cheating and plagiarism. Plagiarism होता है किसी और के कंटेंट, किसी और के आइडियाज को एग्जैक्टली सेम कॉपी कर लेना। दैट इज प्लेगियरिज्म। इससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी नहीं होगी बच्चों को। अगर वो कॉपी कर रहे हैं किसी और की बातें तो विंस योर क्रिएटिविटी। Okay, so in our schools and colleges, if the roots are weak, the tree will eventually fall. We strive to be a knowledge oriented economy. Education not only brings prosperity and wellness in our society, but also helps to curb evil social practices like dowry, female infanticides, black magic practices, etc. Some of the measures to improve our education system will be to focus more on vocational training.
ओके, सो मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि आपको ना इंपॉर्टेंस अगर पूछ रहा है तो उसकी इंप्रूवमेंट की भी कुछ लाइंस यूज करनी है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया है। वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस्टेब्लिशिंग ट्रेड स्कूल्स एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू इनकल टू इन्वॉल्व various other forms standards to involve various other forms of intelligence, emotional, okay, so intelligence, emotional, म्यूजिक्स और इस तरह की अलग अलग चीज़ों की बात की गई इनटू आवर एजुकेशन सिस्टम टू इम्पार्ट मोरल वैल्यूज एंड डिसिप्लिन इन आवर स्टूडेंट्स बाय engaging in various creative activities. By following these measures, we can transform our country as an informative hub for the world. 38 मार्क्स मिली हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से कंटेंट को लिखा गया है, वेरी वेल रिटन, राइटिंग इज सुपर गुड. सो आई कैन से writing is super good, content is good as well. Okay, तो 38 मार्क्स मिले इसमें. लेट्स गो अहेड एंड सी द लेटर पार्ट. लेटर में ऐसा है, यू आर सुनीता सुनील रेसिडेंट ऑफ गांधी रोड द्वारका. ओके, यहाँ पर सो गांधी रोड द्वारका न्यू दिल्ली और पिन कोड लिखा हुआ है, तो आप लेटर में सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ डेट लिखा गया. जो जितना आपको लेटर में लिखा हुआ है आप उतना ही लिखोगे, अगर नहीं है यू विल यूज अ डैश और अ डॉट ओवर देयर. आप ए बी सी एक्स वाई जेड भी नहीं यूज करोगे, अदरवाइज यूएफएम लग जाएगी, अनफेयर मीन्स. ओके, तो जितना लिखा हुआ है वही यूज करोगे. आपको लेटर किसको लिखना है, मैनेजर ऑफ जीडी रेस्टोरेंट न्यू दिल्ली. तो बातें यहाँ पर लिखी हुई है. सब्जेक्ट क्या था कि पुअर सर्विस और क्वालिटी ऑफ फूड मिला था, तो यहाँ पर लिखा गया. ठीक है, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम, बेटर होता अगर अलग लाइन में, अगर अलग बॉक्स में लिखते. इट पेन्स मी टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड एंड सर्विसेज ऑफ योर रेस्टोरेंट. आई विजिटेड योर रेस्टोरेंट yesterday. yesterday का डेट दिया हुआ है 28 December with some of my colleagues, and vegetarian food that we ordered was stale and was too oily. When we complained about the dish to your employees named ABC, okay, आप ये name भी नहीं लिखोगे, to your employees लिखकर हो गया. Instead of resolving the issue, he went on reprimanding us for complaining too much. On top of that, the condition of the restaurant was deplorable. I don't think I need to explain it any further. It ruined the evening for us, and we don't plan on visiting anytime soon. But I hope that you will look into the matter seriously and resolve the situation as soon as possible. Regards, your faithfully Sunita. वहाँ सुनीता नाम दिया हुआ था, सो यू दैट सुनीता. ओके, मुझे यहाँ लगता है कि ये जो नाम इन्होंने यूज किया ना, एम्प्लॉय का नेम एज ए बी सी, आप लोग इससे बच के रहेंगे. ये यूएफएम लगने का एक कारण होता है. अभी बहुत केसेस में यूएफएम लग रहे हैं जिसमें इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, एंड आप इन सब चीज़ों से स्किप कर सकते थे. ठीक है, मैंने कंप्लेन किया आपके एम्प्लॉय से, नॉट नेसेसरी टू राइट द नेम एबीसी और एक्स वाई जेड. ओके, अनलेस इट्स गिवन. अगर एक्चुअली में आप कहीं लिखोगे तो आप उस समय उसका नाम लिखोगे, सो दैट द मैनेजर विल कंसल्ट दैट पर्सन. लेकिन यहाँ पर आप नहीं लिखोगे नेम डीबीसी, बिकॉज क्वेश्चन में नहीं दिया. ओके, सो इस तरह से ये एक एसे और लेटर का 76 मार्क्स का टोटल है. वेरी वेल रिटन. और अगर आपको इसमें से कोई भी पोर्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर नाउ. बाय बाय, गुड नाइट.